हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल कोडिंग क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कोड एज वेल। ठीक है, कोड भी हम डिस्कस करने वाले हैं सी, सी प्लस प्लस, पाइथन 2 एंड 3 एंड जावा, है ना। इन सभी लैंग्वेज में हम कोड डिस्कस करेंगे। सो फुल कोड डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ इन टीसीएस डिजिटल नो नीड टू राइट ओनली लॉजिक, वी नीड टू राइट फुल कोड इनपुट एंड आउटपुट एज वेल एज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, साइड में बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, दे टेक दी 3 इनपुट्स एन ARR। ARR क्या है फ्रेंड्स? द लेंथ ऑफ एरे इज n, n is what length of array, and ARR of n is what array element, n array elements. Okay, then after is k. So let's suppose I just give the value of a is n is 1 2 3 4 and 5. Okay, so this is the array value a 1 2 3 and 5 for example, है ना। then after that friends, sorry, this is the array value, right? this is what the array value. then after friends, n is what 5. ठीक है, n 5 रहेगा, देन एरे एलिमेंट्स क्या रहेंगे फ्रेंड्स 5. देन आफ्टर k इक्वल टू 4. नाउ फ्रेंड्स वी नीड टू रोटेट और वी कैन से दिस शिफ्ट, है ना, वी नीड टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज अवर एरे. लेट सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव k इक्वल टू 3. so what is the output friends? we need to rotate these two elements in the first. we can say these two elements come in first, then these elements come in last. for example, what we need to print? we need to print 4 5 4 5, then after 1 2 3. so this is the output for k equal to 2. this is the output for k equal to 2. here I write k equal to 2. okay, this is the output for k equal to 2. if I talking about k equal to 3 friends, if I am talking about k equal to 3, so then what is the output? then output is basically 3 4 5. this all output is space separated. clear है, 1 and 2. so this is the output for k equal to 3. okay friends, so I hope you got the question. so now friends we take the logic, है ना, if discuss कर लेते हैं अब logic को. ठीक है, now if I'm talking about for logic friends, so logic क्या लगेगा friends? देखिए, we need to print these two element when k equal to 2. so k equal to 2, I just basically give the index 1 2 0 1 2 3 and 4. so this is the index value of array. this is the index of array. okay, so now friends next. so friend देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, हमें 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू ले ली मैंने. अब हम आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए हमें क्या करना है, आउटपुट लेके आना है. क्योंकि फ्रेंड्स जैसा आई टोल्ड इन टीसीएस डिजिटल वी नीड टू राइट फुल कोड, है ना, हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा. तो कैसे लिख सकते हैं? हमें केवल प्रिंट से मतलब है ना. कहाँ पे? जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करें तो हमें आउटपुट से मतलब होता है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में. क्लियर है? सो नाउ फ्रेंड्स सी, 4 and 5 we need to print first. so what is the index of 4 and 5? 3 and 4. so how we take 3? so basically n minus k. if I do n minus k means friends 5 minus 2. n minus k means 5 minus 2 and 5 minus 2 means 3. so we get 3. so 3 से हमें कहाँ तक लूप चलाना है? 4 तक. so it means that n, है ना, लेस देन n तक. ओके, सो आई होप यू गोट दी लॉजिक, है ना. आई होप आपकी कंडीशन समझ में आ रही है. अभी मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे हम तो और आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट फ्रेंड हमें क्या प्रिंट करना है? 1 2 3. सो फ्रेंड 0 टू, फ्रॉम 0 टू n माइनस के, फ्रॉम 0 टू n माइनस के. अब सी, n माइनस के मीन्स 3, बिकॉज 5 माइनस 2 मीन्स 3. सो 0 टू 3 वी नीड टू प्रिंट 0 टू 3. हाउ दिस टाइप्स. ओके, सो लेट्स कम ऑन दी id, देन वी डिस्कस दिस कंडीशन एज वेल, है ना. so friends, now first we take the int value and k and I, right? now I just take an input for n. then after that friends, we take the array. we just declare the array ARR of I, ARR of n, ARR of n. now we just take an element in array for I equal to 0, then I is greater than n, then I plus plus. in these we take the array elements. so C in ARR of I, right? ARR of right. then after we just need to take an k variable as an input for how many array elements we need to rotate, है ना. that's why we take k. then after friends, here we implement logic. okay, logic. okay, now friends, what is logic we have to do? I just copy this for loop, है ना. मैं बेसिकली for loop को कॉपी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी. ठीक है, so friends see, in the for loop what we need to write the condition. I have told
n माइनस के, वाई n माइनस के, क्योंकि फ्रेंड्स 5 minus 2 is 3, we get the index 3, from 3 we need to print the values. Okay, so I come on my id or I just write n minus k. Okay, n minus k, then after friends, sorry after k, ठीक है, then ये क्या हुआ अब, ठीक है, then friends n minus k, so कहाँ तक हमें लूप चलाना है फ्रेंड्स, कहाँ तक लूप चलाना, i is greater than n तक, क्लियर है. then after we just print cout, cout is arr of I. Okay, then we need to print a space because output is as well space separated. ठीक है, आउटपुट क्या है, स्पेस सेपरेटेड. देन फ्रेंड्स अगेन वी नीड ए फॉर लूप, एंड इस फॉर लूप को कहां से लाएंगे फ्रेंड्स, हम जीरो से, जीरो टू एन माइनस के, जीरो टू एन माइनस के. वाई एन माइनस के, आई विल टोल्ड वेट, एन माइनस के मीन्स 3. ओके, फ्रॉम सॉरी 0 to 2, or if I take this type condition, then friends it's just work 0 1 2 and 3 only. Okay, so here now I write cout and after that arr of I and then space. Okay, let's check and चेक करते हैं और देखते हैं क्या एरर आ रही है या कुछ आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा. ओके, एरर आ ही गई. देखिए i इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया, देना था है ना, और लिख दिया मैंने, सॉरी. So friends, see the output is 1 2 3 4 and 5, then after k value is 2, right? So 4 5 1 2 3. I hope you got the output. Let's suppose if I take k equal to 3, we just check the program for k equal to 3 1 2 3 4 5, then after 3. Now friends, what output is come 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, then our program is 100% true. Now friends, this is for logic for C, C++ and Java, है ना. This logic is for all three languages, C, C++ and Java. I just write here C, CPP and Java. In Java friends, you can take a scanner class, and from scanner class you can take an input, this input, this input and this input, and then after friends you need to write in Java system.out.print, don't take ln, है ना, system.out.print of arr plus space, right? Then I hope you got, if you know the Java you can do it, है ना. This is the line, है ना. Here also you can write system.out print और arr of io plus space, ठीक है. So ये आप लिख लेना Java में. Okay, so I hope you got the logic of C, C++, Java. Now we will come in the Python 3 and Python 2. So let's suppose the code for Python 2 and Python 3, फटाफट से कोड डिस्कस कर लेते हैं. So how we do it? So let's suppose n equal to, now first we discuss friends Python 3. First we discuss for Python 3. Okay, so and for Python 3 n equal to int input. Okay, then after friends we just take array, है ना, arr equal to list. We just take in list map function we will use for input, space separated input, है ना, input or dot split split. Okay, then after friends what we need, k. What we need friends, k. So हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, k चाहिए, है ना. तो then k. Now friends after that I just take an variable, in the variable I just use slicing. Now friend हमें कहाँ से कहाँ तक चला था, n minus k to n, or we not need to write this, or here we need to 0 to n minus k, right? n minus k or arr. Here I use slicing, है ना. If you know the Python then you know this concept as well. Then print p, I just check it. So you can check it, है ना. आंसर हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है. 3 4 5 1 2 for k equal to 3. Now I just take for k equal to 2. For k equal to 2, so 4 5 1 2 3. I hope you got the answer. Now friend, but here the list is printed, but we need to print space separated, so we just mark an asterisk symbol in Python. Okay, we just mark an asterisk symbol in Python. So I hope you got logic or code as well, है ना. Now we discuss for Python 3. Now I discuss for Python 2, है ना. अब Python 2 के लिए डिस्कस कर रहे थे. Now what we need to change, we just change here raw space raw input, right? In Python 2 we just take input with a raw input, right? Remaining code is same, है ना. Remaining code is not same, we need to change print statement as well.
है ना, हमें प्रिंट स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, सो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा फ्रेंड्स पाइथन 2, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास पाइथन 3 का आईडी है, वी हैव पाइथन 3 आईडी, सो दैट्स व्हाई दिस कोड इज नॉट वर्क इन दिस आईडी, सो यू कैन चेक इट ऑन ऑनलाइन कंपाइलर एज वेल, है ना। So this is full code for TCS Digital, this type of question, or this is for C++, Python, or sorry, C++, Java and C code, whole code we can say, right, है ना। You don't forget to include the header file, okay, header file को include करना मत भूलना, नहीं तो error आएगी। ठीक है, so I hope you got the question, logic और code। कोई डाउट क्यूरी रह जाते तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स इफ यू नॉट अप्लाई इन दीज टू हायरिंग, है ना, कंटार इज फॉर 4 लाख पर एनम और मेट्रिक स्ट्रीम फॉर 6 लाख पर एनम। इफ यू नॉट अप्लाई इन दिस हायरिंग, यू कैन चेक आउट, ऊपर आई बटन है ना, ऊपर आई बटन चेक कर लेना एक बार। और फ्रेंड्स इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट विद अस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस फ्रेंड्स। हियर इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द न्यू ग्रुप्स लिंक्स ऑफ द व्हाट्सएप, है ना। इफ यू आर in any previous group, है ना, if you are in any previous group, then no need to join the new group, है ना, we will provide the same content in every group, so please friends, I hardly request you, so please don't join more than one group, है ना, you can join a single group, we will provide the same content in each and every group, है ना। आपका व्हाट्सएप का मैसेज ही स्पेस ही भरेगा, है ना, so don't, no need to join more than one group, है ना, एक ही ज्वाइन कर लो वही काफी है। and you can join our telegram channel as well, so friends this is our telegram channel, you can join it, है ना, as soon as possible please join it friends। ठीक है, here we update the hiring plus questions और something else, है ना, so बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, like this is the solution, right, so you can join it, है ना, as soon as possible, because we provide the solution here and we just update as well, है ना, this is our placement students। So I hope friends you got the whole thing, if you have any doubt query you can comment me or you can personal contact me as well, है ना, no issue। so इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। if you are new at my channel please subscribe and don't forget to click bell icon button, okay, thank you friends।